that is some applications of trigonometry. Yes, dear students, in this only one exercise is there, and in one exercise 16 questions. All questions are very important. 1 4 marks or 3 mark question always come from this chapter. This chapter is very important. You will find questions of this chapter in competitive exams also. Yes, dear students, in this chapter we will use some formulas which we have studied in chapter 8. Actually, this chapter is based on chapter 8. We have studied formulas Pandit Badri Prasad, हर हर बोले, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चांदी सोना चांदी. These formulas we have studied in our exercise 8.1, and that table, angle value table, theta 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. Here sin theta, how we have calculated it? Square root of 0 by 4. We will get 0. Here square root of 1 by 4 means 1 by 2. Here 1 by root 2. Here root 3 by 2 and 1. Cos theta 1 root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 0. Tangent theta 0, 1 by root 3, 1, root 3 not defined. After this, cosecant theta not defined, 2, root 2, 2 by root 3, 1. Then secant theta 2 by 1, 2 by root 3, root 2, 2, infinite. After this, cot theta infinity, root 3, 1, 1 by root 3, 0. This is our theta table. We will use this table in each and every question of this exercise. Now come to the main concept which we will study in this chapter. Yes, dear students, there are 2 points, that is angle of elevation and 1 point is angle of depression. These are 2 main points, and whole exercise is based on these 2 points. In each question we will use these 2 points. After this we will use this value, these values from this table, this concept also. Now come to the angle of elevation. What is angle of elevation? Suppose this is a horizontal level, plain ground, and one girl or one boy is standing here. One boy is standing here and he is flying a kite. भाई वो एक पतंग उड़ा रहा है. अब वो यहाँ से खड़ा है, उसको ऊपर की तरफ देखेगा. Now draw a line parallel to horizontal level. ये लाइन इसके पैरेलल होगी. हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल एक लाइन लेंगे. Now observer is here, boy is here. We can say it is observer. Why is it is observer? Because here one angle formation will take place when observer is on the ground level and he or she is looking at upside. अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा है, then one angle is formed. एक एंगल बनता है यहाँ पे, and we represent this angle by theta. And जिस लाइन में वो देख रहा है, that is line of sight.
लाइन में वो देख रहा है, वो क्या है, लाइन ऑफ साइट है कि उस डायरेक्शन में वो देख रहा है. देन दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल. That angle formed by line of sight and by this parallel line parallel to horizontal level or with the horizontal level is called angle of elevation. In short, we can say that suppose I am standing here and I am looking upside. भाई मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ, तो इस ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन हम अज्यूम करते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन है. अब मेरी आईज से जो ऊपर की तरफ एंगल की फॉर्मेशन होगी उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. आई थिंक इट इज क्लियर. यस डियर स्टूडेंट्स, और आप सिंपली ये बोल सकते हैं जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं और एंगल की फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ कम टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. सपोज I am standing at the roof of my house. मैं अपने घर की छत पे खड़ी हूँ. And I am looking downside. भाई मैं यहाँ से नीचे की तरफ देख रही हूँ. Suppose one object is there and I am looking at it. Then it is ground level or horizontal level. Then we will assume that this line is parallel to this. हम assume करेंगे ये जो line है इसके parallel है. अब मैंने यहां से नीचे की तरफ जो देखा, यहां पे ये आपकी क्या बनेगी, लाइन ऑफ साइट एंड द एंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन ऑफ साइट बिटवीन बाय दिस लेवल इज कॉल्ड थीटा एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. और इन शॉर्ट वी कैन से दैट जब हम ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज देख रहे हैं और वहां पर जिस एंगल की फॉर्मेशन हो रही है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ऊपर की तरफ हमने एंगल देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड इफ वी आर लुकिंग डाउन साइड देन इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. यस डियर स्टूडेंट्स, these are the main points in this chapter. Now after this come to exercise 9.1. Yes, what is given in question number first of exercise 9.1? In question number 1, its diagram is given, but I have not drawn the diagram because we will draw diagram ourselves. Yes, a circus artist is climbing a 20-meter long rope. What is it given here? Length of rope is equal to 20 meter. After this, which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole. Tightly stressed जिसको एकदम tightly खींचा गया है और उसको बांधा गया है from the top of a vertical pole. अब हमें यहाँ पर एक pole भी given है. Let this AB is a pole. ये क्या हमने किया, हमने पोल, यहां से हमने रस्सी को बांधा है इस पॉइंट से. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, हमने इसको यहां से टाइटली खींच के इस तरह से बांधा है. ये हमारा ग्राउंड लेवल, यहां हमने उसको टाइप किया है. लेट इट इज पॉइंट सी. लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है. दिस इज द पोल. पोल के टॉप पॉइंट से हमने रोप को टाइटली स्ट्रेच करके बांधा है ग्राउंड के सी पॉइंट से. नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. वी हैव टू फाइंड दिस हाइट. हमें यहां पर ये ए भी फाइंड आउट करना है. इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अब आगे क्या गिवन है, एंगल इज गिवन कि भाई रोप ने एंगल बनाया विद द ग्राउंड लेवल. दिस इज ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल के साथ इस रोप ने एंगल बनाया है 30 डिग्री का. Yes dear students, now statement clear. What is given? A circus artist is climbing at a rope of 20 meter. This is a rope, this is a pole.
height of the pole. Now dear students, what we will find, first of all we will write given length of rope, that is AC is equal to 20 meter, angle ACB is equal to 30 degree, and what we have to find height of the pole AB. We have to find AB. Now in solution part, what we will do, come to this triangle, in triangle ABC, let AB is equal to H meter, because this AC is 20 meter and AC is equal to 20 meter. We have written this angle also, we have written. Now what we have to find, we have to find AB. हमें इस AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. डियर स्टूडेंट्स, हमें जो फाइंड आउट करना है उसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे और उस फॉर्म का यूज करते हुए हम इस फॉर्मूले पे आएंगे. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड AB. हमें क्या फाइंड आउट करना है? AB. एंड व्हाट इज गिवन? AC. Yes dear students, if it is angle then it will behave as perpendicular and it will be its hypotenuse. अब देखो यहाँ पे ये जो पोल है वो तो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज का, एंड वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर इन दिस ट्रायंगल. अगर हम ट्रायंगल को अज्यूम करते हैं तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज AB. नाउ जो हमें फाइंड आउट करना है हमने उसको रखा ऊपर डिवाइडेड बाय what value is given? AC means perpendicular upon hypotenuse. Now come here, perpendicular hypotenuse is sin theta and it is equal to sin theta. Now what is AB? AB is H, AC is 20 and sin theta is 30 degree. Now H by 20 is equal to, come to this table, sin 30. What is the value of sin 30? 1 by 2. Then H will equal to, we will do cross multiplication here. What is the value of H? 10. So height of the pole is equal to 10 meter. Yes dear students, like this we have to find this portion. Yes, what we have done, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हमने अप साइड रखा, जो वैल्यू गिवन है उसको डाउन साइड, एंड these are the part of right angle triangle, so we can use this formula, and according to this perpendicular upon hypotenuse is sin theta. So in this triangle AB upon AC is equal to sin theta, and what is the value of theta? 30. AB H, AC 20, H by 20 is equal to sin 30 1 by 2. So from here we have find the value of H. So height of the pole is 10 meter. This is our question number 1. Yes dear students, now question number 2. What is given in question number 2? A tree breaks due to storm. एक पेड़ जो है तूफान के कारण टूट जाता है, and the broken part, suppose it is tree, और ये यहाँ से टूट गया है, then its broken part bends, ये टूटा हुआ पार्ट बेंड कर जाता है, so that the top of the tree, ये जो टॉप है वो touches the ground, ग्राउंड को टच करता है. Let it is in this form. It is the tree and it is the topmost part of the tree and it touches the ground. ये ग्राउंड को टच करके इसके साथ 30 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है with this ground. Now the distance between the foot of the tree, अब देखिए ये क्या है? टॉप ऑफ द ट्री, दिस इज फुट ऑफ द ट्री. दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द
Yes, come here dear students. Our diagram is in this form. हमारा diagram इस form में है. This is 30 degree. Let this point is A, this is B, and let it is C. BC is 8 meter. Thus 8 meter is given. Now what we have to find? We have to find the tree. Yes dear students, अब देखो height तो complete ये प्लस ये है, मीन्स तभी तो हमें complete ये height मिलेगी. Complete height तो ये है. This plus this means come to this triangle diagram. Then height of the tree will be AB plus AC. How? Because this part of triangle and this one is this bended part of the tree. So total height will be AB plus AC. ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है कि आपने टोटल हाइट किस तरह से फाइंड आउट करनी है. सम स्टूडेंट्स विल सॉल्व ऑन दिस पार्ट. सिर्फ क्या करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे. देन इट विल बी रॉन्ग बिकॉज आवर टोटल हाइट इज AB plus AC. नाउ दिस वी हैव टू फाइंड. What is given in this question? Distance between the foot and top of tree is 8 meter and angle is ACB is equal to 30 degree. These values are given and we have to find this. Now come to solution part. In solution, yes dear students, how we will find this AB and AC? We will find AB and AC separately. After finding the values of AB and AC, we will add those values. So now come to this triangle. In triangle ABC, BC is equal to 8 meter. This is given. We have to find AB. अब AB find out करना है. That one we have to find AB means AB, and what value is given? BC means AB upon BC. Now this is perpendicular and this is base, and we know that perpendicular upon base is tangent theta, so it will equal to tangent theta. AB we have to find. BC 8, tangent and theta is 30. AB upon 8, tangent 30 is 1 by root 3. 1 by root 3. So from here AB is equal to 8 by root 3. That it is equation number 1. हमने यहाँ से AB की वैल्यू फाइंड आउट की. AB is equal to 8 by root 3. Now we will find the value of AC. So in same triangle AC upon BC, AC we have to find. AC क्या है यहाँ पे? Hypotenuse. BC is base. Hypotenuse upon base is secant theta. और you can take BC upon AC. आप BC upon AC भी ले सकते हैं. Then it will be cos theta. AC is we have to find. BC is 8 secant 30 degree. AC by 8. What is the value of secant 30? Secant 30 is 2 by root 3. 2 by root 3. So AC is equal to 8 to 16 by root 3. Let it is equation number 2. Yes dear students, अब हमने यहाँ पे AB और AC की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है. But what we have to find? We have to find the sum of these two. Height of tree is equal to AB plus AC, and what is the value of AB? 8 by root 3, and what is the value of AC? 16 by root 3. Then these values from equation first and second. Now after adding we will get 24 by root 3. अब हमें यहाँ से क्या मिला? 24 by root
root 3, then what we will find? Height of tree is 24 by root 3 and this denominator is in root. अब हम डिनोमिनेटर पार्ट में स्क्वायर रूट में वैल्यू नहीं छोड़ सकते. Then what we will do? We will do rationalization. On rationalization, we will get 24 by root 3 into root 3 by root 3. So 24 root 3 into root 3 we will get 3. 3 8 means 8 root 3 meter. This is the height of the tree. So in this case, height of the tree is 8 root 3 meter. Yes dear students, what we have done? We have formed a right angle triangle by using given information. What is given? एक ट्री है, यहाँ से बीच से टूट जाता है तो उसका एक टॉप पार्ट ग्राउंड को टच करता है, लेकिन ग्राउंड को टच करने के बाद भी जो हाइट होगी वो टोटल हाइट ही तो होगी. सो in this case AB plus AC is the total height, and using the value of BC we have find the value of AB and AC. AB by BC is equal to tangent theta. So from here AB is equal to 8 root 3, that it is our equation number 1. And after this AC upon BC secant theta, and theta is 30 degree. AC by 8 is equal to secant 32 by root 3. AC will equal to 16 by root 3. But we have to find the height of the tree. Height of the tree is AB plus AC, means 8 root 3 plus 16 root 3. As denominator is same, then LCM will be root 3 and we will get 24 by root 3. After this we can't leave values in the form of root in denominator part. So what we will do? We will do rationalization, and rationalization we have learned in our class 9th chapter 1. So 24